Hey, so let's look at what happened in 3 minutes. Nifty. There was a down volume in the morning, which the initiator candle's high was taken out with volumes, and this candle, the buy volumes initiator candle low was also taken out. If this fall had volumes in it, it would have been a good sell, but if you see, there were no volumes, so turns out to be sideways or kind of a reversal. And also I had shared a system trade around 12:30 or 12:45 in my on my YouTube channel and as a trading view idea. So which also was okayish because there was no range, but we still managed to capture around 30 points. So this was the trade above one buy, and I did exit around these levels because there was a fall in the morning and there was no here also if you see the candles not really have any strength when they were going up and no volumes. Plus, this candle also came in. So yeah, I booked around when this one of these candles closed. I think 6250 levels. Uh, Not 625, 825 levels. Yeah, and so this was my reference. If you're watching my post market videos, you know what this means. So even if here also if you look, two makes a high and after this mostly sideways to bearish. Did not trade Bank Nifty today. Nifty positionally, I'm not really looking to buy or sell right now. I look for a trade tomorrow morning and see how this first candle closes. If it closes above this candle high, then I look for a buy opportunity with stop loss this candle low. Yeah, and till probably this is holding. I will not look for a bearish move and not looking for a bullish move either. But yeah, tomorrow I think there should be some good moves tomorrow towards buying side. But I probably will be very careful on how the for 1 hour candle closes and then see what is happening and then decide. So it'll be very difficult to give this trade on as a on post market because I think most of the moves which will happen as it happened today. There'll be a couple of candles which will be will make the move and then it mostly will be sideways. But let's see. निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 3 मिनट में पहले डाउन वॉल्यूम आया, फिर उसका हाई टूट गया जिसने इनिशिएट किया था डाउन वॉल्यूम, और फिर अप वॉल्यूम आया और उसका भी लो टूट गया जिसने इनिशिएट किया था। पर अब मोस्टली एक अच्छा ट्रेड बनता है जब यहाँ से जब ये फॉल आती है और इसका लो टूटता है, तो ये फॉल में अगर वॉल्यूम्स हैं तो एक अच्छा सेल बनता है कंसोलिडेशन के बाद। स्टॉप लॉस रहता है हाई। ये मैंने बहुत सारे ट्रेड्स में शेयर किया है, अब कम से कम 2-3 बार तो शेयर किया ही है पोस्ट मार्केट में अपने। तो और ऐसा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थी इस फॉल में, तो ये मोस्टली रिवर्स कर देता है। अब यहाँ पर रिवर्स साइडवेज टू बुलिश रहा। तो अगर आप देखेंगे तो 12:30 के आसपास मैंने एक ट्रेडिंग व्यू में और अपने यूट्यूब चैनल में ये आइडिया पोस्ट किया था कि 1 o'clock के ऊपर बाय करना है और स्टॉप लॉस अगर ये लो नहीं टूटा, नया लो नहीं बना तो, और स्टॉप लॉस रहेगा डे लो या 1 o'clock लो। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसने 1 o'clock ने ये एक मूव दिया है जो कि ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स था। अब मैंने यहाँ पर इसलिए बुक किया क्योंकि एक तो मेरे पास रेफरेंस में भी था, इसके बाद रेफरेंस में नहीं भी है अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फॉल आया था 3 मिनट में। अब यहाँ पर कोई वॉल्यूम्स ही नहीं है और हर हर एक अप मूव में या हर दो कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है, तो ये बेसिकली इतना स्ट्रेंथ है नहीं वॉल्यूम्स में, इतना स्ट्रेंथ है नहीं अप मूव में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जैसे ये 10 MA के नीचे क्लोज हुआ था, यहाँ पे मैंने बुक कर दिया था 6 to 5 लेवल्स के आसपास। और निफ्टी में तो बेसिकली वैसे भी ज़्यादा कुछ रेंज था नहीं, 30-40 पॉइंट्स के रेंज में घूम रहा था निफ्टी 1 बजे के बाद। तो उसमें से मैंने 25 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए और बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड नहीं किया। निफ्टी में पोजिशनली भी मैंने अभी भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने में। क्यों? क्योंकि अभी भी उसने कुछ किया नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, कल का एक कैंडल 1 आवर कैंडल, फर्स्ट 1 आवर कैंडल क्लोज का वेट करूँगा मैं। उसके बाद अगर वो कैंडल अगर इस आज के लो के ऊपर क्लोज होता है तो मैं एक बाय ट्रेड इनिशिएट करूँगा और स्टॉप लॉस रहेगा ये लो। अगर वो कैंडल इसके नीचे कहीं क्लोज होता है तो मैं बुलिशनेस में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ और मैं अभी भी शॉर्ट नहीं जाऊँगा जब तक ये कैंडल होल्ड कर रहे हैं, ये दोनों कैंडल। थैंक यू।